morning, students. So in last video we saw in the noble stag chapter, all the all of the soldiers of kings and king was standing into the round semicircle position, and the stag was hidden into the thicket, and the king bowed his arrow and aimed on the stag, but the stag rolled over, and king thought that he the aim was uh, aimed at the bow. The bow was टारगेटेड और बो जो ये बाण है वो लग चुका है स्टैग को, और इस वजह से स्टैग घायल होके गिर चुका है. बट द थिंग वॉज नॉट लाइक दैट. द स्टैग stood up and ran into the thicket again. Okay, because stags generally, what they do, they roll over and then they run, they jump, they hop, and they वो अपने दुश्मनों को मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं कि उनको लग चुका है तीर, बट एक्चुअल में वैसा होता नहीं है. सो नाउ व्हाट हैपेंड, and King Brahmadatta follows the stag into the thicket because the soldiers were laughing on him. Okay, तो जब उसके सोल्जर्स उस पर हंसने लग गए तो किंग को गुस्सा आ गया और वो स्टैग का पीछा करते हुए उसके पीछे गया. नाउ व्हाट हैपेंड, द स्टैग केम अपॉन अ होल इन अ ग्राउंड दैट was covered by a rooting tree and filled with slime. Okay, now the stag came upon a hole in the ground. अभी स्टैग कहाँ आ गया था, एक होल के पास आ गया था जो एक ग्रीन ट्री के जो रूटिंग होती है, जो लीव्स होते हैं, फांदी होती है, उनसे ढका हुआ था और स्लाइम भरा हुआ था. स्लाइम मीन्स वी कैन से दलदल. ओके, मीन्स वो ऐसा चिखल जिसके अंदर पैर डालते ही हम अंदर अंदर जाने लगते हैं. दैट इज नोन एज स्लाइम, चिप चिप. ओके, from a distance he could smell the dirty water and so was careful not to run over it. But the king could not sense the pit and fell right into it. If the stag is living into the forest, he knows everything about it. That's why he took he could smell the dirty water, okay, from the distance only, but the and he doesn't run over it. Okay, वो होल को जानता था, इसीलिए उस होल के ऊपर से वो भागा नहीं, वरना वो उसके अंदर ही गिर जाता. लेकिन किंग को इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो इसीलिए वो किंग उसके अंदर ही गिर गया. ओके, आफ्टर अ वाइल द स्टैग रियलाइज दैट ही वॉज नॉट बीइंग followed any longer. He understood that king had perhaps fallen into pit. ओके, अब आगे स्टैग था, पीछे किंग था. स्टैग उछल के होल के उस पार पहुंच गया, एंड द किंग could not sense the dirty water or the hole, so king fell right into it. So what happened next, the stag realized that कि मेरा पीछा बहुत देर से कोई नहीं कर रहा है, तो वो समझ गया कि किंग उस होल के अंदर गिर गया होगा. So the stag went back to the pit and saw the king struggling for his life. अब स्टैग ने क्या किया, वो वापस उस पिट के पास गया. मीन्स हियर पिट मीन्स व्हाट, द होल फुल ऑफ दिस लाइम एंड रूटिंग ट्रीज. ओके, सो वो पिट के पास फिर चला गया. वहाँ पे देखा कि किंग अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, पूरा अंदर ज़मीन के अंदर चला जा रहा है, लेकिन वो किसी तरह से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है. द स्टैग फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द किंग and he decided to save king's life even though the king was following him with the intention to kill him. Okay, now what happened, the stag felt sorry, मीन्स उसे बहुत बुरा लगा किंग के लिए, तो उसने डिसाइड किया कि मैं किंग की लाइफ सेव करूँगा.
तो भी लेकिन फिर पहले तो स्टैग को किंग मारना चाहता था, उससे ये पता था, लेकिन फिर भी वो किंग की लाइफ सेव करने का उसने डिसाइड किया. द स्टैग टोल्ड द किंग नॉट टू वरी एंड टू बी ब्रेव फॉर अ while longer. Okay, he then caught a huge rock with his hind legs and lowered himself into the pit. The king caught hold of his neck, and the stag climbed uh, out into the level ground and carried the king safety to the safety. Okay, now what happened? The stag lowered his neck into the pit. उसने अपनी गर्दन, as you can see in this picture, the stag is having a long neck. Okay, so उसने क्या किया, अपनी गर्दन जो पिट है, पिट के अंदर पिट के तरफ झुका दी. एंड देन व्हाट हैपेंड, वो किंग ने उसकी जो गर्दन थी, जो नेक थी, उसको पकड़ा और उस टैग ने एक भारी पत्थर लेके आया था अपने पैरों के बीच में. ओके, तो उस वजह से वो भी नीचे नहीं जा, दलदल में नहीं जा सकता था. सो किंग ने उसकी गर्दन पकड़ के वो खुद ऊपर आया और इस तरह से स्टैग ने किंग की लाइफ सेव की. Now what happened? The king thanked the noble stag again and asked him to return with him to Banaras, where he could have anything and everything he wanted. The king thanked the noble stag. अब किंग ने बहुत उसे थैंक यू कहा क्योंकि उसने उसकी लाइफ सेव की, और कहा उसे कि तुम हमारे साथ बनारस चलो. बनारस मीन्स हियर द किंग ब्रह्मदत्ता's kingdom was Banaras. Okay, was named as Banaras, and today we also known as the Kashi or the Varanasi or Banaras, वेयर ही कुड हैव एनीथिंग. और अगर वो किंग की लाइफ सेव करके उसकी सिटी में जाता है तो उसे जो चाहिए वो एज अ गेस्ट ट्रीट करते वहाँ पे. ओके, बट द स्टैग डिड नॉट वांट एनीथिंग इन रिटर्न फॉर हिज हेल्प. द स्टैग, as the chapter's name says, that the noble stag. Okay, so noble stag, why he is noble stag? Because he saved the same king's life, who wanted to kill him for his self. Okay, for his we can say selfish motive. And then also stag saved his life, and in return on also he didn't want anything. He didn't ask anything in return. He just requested the king to rule wisely and well and be kind to animals. He just requested to king rule wisely and return and बी काइंड टू एनिमल्स. मतलब वो अच्छे से तरह से अपना शासन चलाए एंड एनिमल्स के साथ अच्छी तरह से बिहेव करे. देन द नोबल स्टैग डिसअपेयर्ड इनटू द फॉरेस्ट. इतना बोल के जो नोबल स्टैग था वो फॉरेस्ट में मतलब फॉरेस्ट में चला गया, कहीं तो चला गया. किंग ब्रह्मदत्ता देन वोव नॉट टू हंट और हर्ट एनिमल्स. उस दिन से किंग ब्रह्मदत्ता ने डिसाइड किया कि मैं आज से किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं करूँगा. ओके, सो दिस वाज द स्टोरी. इफ वी here in the story, what is the moral of the story? We can say, if we doesn't hurt any animals or harm any animals, they are like our friends. Okay, अगर हम उन्हें परेशान करेंगे तो हमें वो परेशान करेंगे. बट इन दिस स्टोरी द स्टैग वॉज सो नोबल कि उसको किंग ने परेशान किया, उसे किल करने की कोशिश की, फिर भी उसने किंग की लाइफ सेव की. ओके, सो we should always help animals and we should be kind to the animals. Okay, so this was the story of the noble stag and the king Brahmadatta. So next I am going to give you a short homework on this. You have to write question answers and send the picture on the Google Classroom. Thank you so much. Do complete your homework.